Assalamu alaikum dear students. Today we will solve some questions of exercise 5.2. Dear students, the question is an AP consists of 50 terms. हमारे पास एक arithmetic progression है, इसमें number of terms, total number of terms जो इसमें है that is n is equal to 50. Number of terms, arithmetic progression इसमें number of terms है 50. n is equal to 50. Of which third term is 12. उसी arithmetic progression की third term means A3 is equal to 12. And the last term of this arithmetic progression, last term, अगर इसकी total number of terms 50 है, therefore A50 वो उसकी last term होगी that is equal to 106. हमारे पास एक arithmetic progression में इसमें total number of terms कितनी है 50. Number of terms is 50. And उसी arithmetic progression की third term है 12. और उसकी लास्ट टर्म मीन्स A50 थी क्योंकि 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म होगी A50 दैट इज इक्वल टू 106. वी हैव टू फाइंड इट्स A29th टर्म. we have to find it as 29th टर्म. 29th टर्म तब आएगी जब हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म हो यानी A और इसकी कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस हमें पता हो. डियर स्टूडेंट्स, वी विल यूज दीज टू कंडीशंस. हमारे पास A3 है. A3 means here n is equal to 3. Therefore, A3 can be denoted as A plus 2D because dear students, A3 can instead of A3 I can write A plus 2D is equal to 12. A3 is equal to 12. A3 is equal to A plus 2D. N minus 1. Here n is equal to 3. 3 minus 1 is equal to 2. 2 is equal to 12. A50. Here n is equal to 50. Therefore, A50 can be written as A plus 49D. N minus 1. 49D is equal to 106. 106. हमारे पास दो equations, linear equations आ गए. We can further solve them by elimination method. Now dear students, here the coefficients are same. Now by subtraction तो इसकी साइन चेंज होगी तो a और a कैंसिल होगा. प्लस माइनस माइनस 49d माइनस 2d we get minus 47d is equal to प्लस माइनस माइनस 106 माइनस 12 we get minus 94. माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास जो d आएगा d is equal to 94. 47 इसको डिवाइड होगा therefore we get 9d is equal to 2. तो जो कॉमन डिफरेंस इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है उसकी डिफरेंट कॉमन डिफरेंस द फिक्स्ड टर्म इज 2. नाउ सब्स्टिट्यूट वी कैन find the first term of this arithmetic progression by substituting the value of d in equation first. When we substitute the value of d in equation first or second, we will get the first term means a of the arithmetic progression. Now dear students, substitute the value of d in equation first we get. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. d का वैल्यू जो अभी आया 2 इज इक्वल टू 12. तो वी गेट a प्लस 2 2s आर 4 इज इक्वल टू 12. सिंपली a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विद 12 4 जो ट्रांसपोज होगा तो वी गेट a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 वी गेट a इज इक्वल टू 8. तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म हियर a1 इज इक्वल टू 8 और उसकी जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2. नाउ वी कैन फाइंड एनी वन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द 29th term of the arithmetic progression. Now dear students, here a is equal to 8 and d is equal to 2. Now we can find the 29th term. We can find any term of this arithmetic progression. Now A29 is always equal to a plus n. We can write an is equal to a plus n minus 1 into d. Here n कौन सी टर्म हमें ढूंढनी है 29. therefore n is equal to 29. therefore A29 is equal to a plus n minus 1. it is 29 minus 1 into d. or simply we can write A29 is equal to a plus 29 minus 1 is equal to 28 into d. 28. Simply A29 is equal to a plus 28d.
because n minus 1, 29 minus 1, we get 28. Now substituting the value of a and d, we get the 29th term. Therefore a29 is equal to, here a is equal to 8 plus 28 into d का जो वैल्यू था वो था 2, तो we get 8 plus 29 into 2 we get 28 into 2 we get 56. तो जो 29th टर्म होगी 29, 8 plus 56 we get 64. Therefore इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, जिसकी थर्ड टर्म 12 है, जिसकी 50th टर्म 106 है, तो इसकी 29th टर्म क्या होगी 64. Now dear students, now the second question, another question is, now dear students, next question is, if the third and the ninth term of AP are 4 and 8, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी थर्ड टर्म मीन्स A3 is equal to 4 and A9 is ninth term of the arithmetic progression is -8. Arithmetic progression इसकी थर्ड टर्म is 4 और उसकी नाइन्थ टर्म है that is -8. We have to find which term of an AP is 0. इस arithmetic progression की एक टर्म 0 है, जैसे थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म 8 है, तो एक टर्म इसमें 0 भी है. We have to find the term which is equal to 0. Dear students, हमारे पास पहले a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए. We use these two conditions to find the value of a and d. Now here it is a3. Dear students, a3 is denoted by a plus 2d. A plus 2d is equal to 4. Also a9, it can be written as a plus 8d is equal to -8. So equations first and second, we can simplify them by elimination method. तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, a and a will get cancelled. 8 minus 2 we get -6d is equal to plus plus plus, that is equal to 12. तो d is equal to 12 divided by 6, that is equal to -2. तो d का जो वैल्यू आया that is equal to -2. Now we can substitute the value of d in equation first or second to get the value of a, यानी first term of an arithmetic progression. Now we can substitute d in the value in the equation first. Equation first क्या है? A plus 2d is equal to 4. Now a plus 2 into d is equal to -2. Replace d by -2 because d is equal to -2 is equal to 4. Here a प्लस माइनस 2 2s are 4 is equal to 4. अब हम इस -4 को ट्रांसपोज करेंगे, we get a is equal to, पहले a4 लिखेंगे, -4 ट्रांसपोज होगा तो +4 होगा, therefore a is equal to 8. तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है that is 8 और जो कॉमन डिफरेंस है that is -2. Now we have to find the term number of terms that is equal to 0. Here a is equal to 8 and d is equal to -2. Dear students, let the nth term of an arithmetic progression be 0. Let the nth term of let the nth term of an AP is 0. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म 0 है, लेट इट बी nth टर्म. Therefore हमारे पास जो फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d. हमारे पास a का भी वैल्यू है that is 8 और d का वैल्यू है -2. Substituting the values of a and d we get the n. Here we have to find the value of n. Here an is equal to, ये देखो, let the nth term, तो इसका वैल्यू क्या लिखना है हमें 0 बिकॉज nth टर्म को सब्स्टिट्यूट किया मैंने, that is equal to 0 is equal to a का वैल्यू 8 प्लस n minus 1 into d that is -2. तो 8 को हम ट्रांसपोज करेंगे that is equal to -8. -8 is equal to 2 से मल्टीपल होगा 2 into n minus 2n minus plus that is equal to 2. अब इस +2 को ट्रांसपोज करेंगे, ये होगा -8 plus 2 होगा -2 is equal to -2n. We get minus plus -10 is equal to -2n. माइनस और माइनस कैंसिल होगा and dear students we get 2n is equal to 10 or we can write n is equal to 10 divided by 2, that is equal to 5. Therefore here n is equal to 5. Therefore fifth term
फिफ्थ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी 0, फिफ्थ टर्म ऑफ देन जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है वो अभी आई थी 8, जिसका कॉमन डिफरेंस -2 आया था, जिसकी थर्ड टर्म 4 है, जिसकी नाइन्थ टर्म -5 है, और उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ टर्म दैट इज इक्वल टू 0, वो इसकी फिफ्थ टर्म दैट इज इक्वल टू 0. Another one question is, now dear students, the last question, another question is, the important question is, the 17th term of an AP exceeds the 10th term. 17th term means A17 exceeds the 10th term means A10 by number 7. It is the condition given in the question. 17th, we have given an arithmetic progression जिसकी 17th term exceeds the 10th term by number 7. यानी the difference between 7th term and 10th term is 7. 17th term and 10th term is 7, or we can say that 17th term exceeds the 10th term by 7. We have to find that it is common difference. We have to find the value of D. Now dear students, A17 can be written as A plus 16D. We write we are given A17 is equal to A10 plus 7, or we can transpose it. We get A17 जब ट्रांसपोज होगा माइनस A10 इज इक्वल टू 7. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. नाउ A17 का वैल्यू हम इसको it can be written as A plus 16D. A plus 16D. A17 is equal to n minus 1, that is A plus 16D. तो माइनस तो ये A10 that is equal to A plus 9D is equal to 7. पहले हम इसमें A से मल्टीपल करेंगे ब्रैकेट में, तो वी गेट A प्लस 16D माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D is equal to 7. Now dear students, it is positive and negative, they will get cancelled. 16D minus 9D, 16 minus 9, that is equal to 7D. So we get in the difference 16D minus 9D, we get 7D is equal to left hand side में right hand side में 7. So D is equal to 7 divided by 7, that is equal to 1. Therefore this arithmetic progression की common difference which we have to find, common difference will be 1. क्वेश्चन में था 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7. नाउ A17 के बदले मैंने A10 को मैंने ट्रांसपोज किया, वी गेट A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7. तो A17 का वैल्यू लिखा मैंने A प्लस 16, वी कैन राइट इट एज A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 60. और ये माइनस था, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, फिर माइनस मैंने प्रोडक्ट किया, माइनस इंटू A माइनस प्लस माइनस 9D, A and A will get cancelled. 16 minus 9 we get 7D is equal to 7. 7 and 7 get cancelled. D is equal to 1. Therefore इस arithmetic progression की जो common difference that is equal to 1. इसके साथ ही आपकी जो exercise 5.5 complete हो गई.